वेलकम टू ओडिशा एजुकेशन सर्विस आपण समस्त को ओडिशा एजुकेशन सर्विस रो यूट्यूब चैनल को स्वागत करा जाउछि। आमे प्रीवियस क्लास रे डिफरेंट कंटेम्पररी वेस्टर्न एजुकेशनल फिलोसफी को आमे देखिथिले। आमे ए क्लास रे आमे पेरिनियलिज्म ऊपर डिस्कशन करिबा। इट इज द पार्ट ऑफ द कंटेम्पररी वेस्टर्न एजुकेशनल थॉट philosophy of education for the Odisha Education Service School branch. So आमे first perennialism कोन तार गोटे ओवरव्यू नै जिवा। Perennialism is the teacher-centered educational philosophy that emphasizes the universal truth enduring the ideas classical knowledge. The term comes from the perennials, meaning the everlasting, signifies that the certain truth constant and shoot from the core of the knowledge. हमें फर्स्ट किसी तरह ओवरव्यू नहीं गले कि पेरिनियलिज्म कहबा कोन जाउछ गोटे टीचर सेंटर पेरिनियलिज्म इज ए टीचर सेंटर एजुकेशनल फिलोसफी that emphasizes the universal truth enduring the ideas and the classical knowledge. Then हमें नेक्स्ट जीवा तार मीनिंग ऊपर जीवा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द पेरिनियलिज्म तार मीनिंग है हमर पेरिनियलिज्म बिलीव्स in the education should be focused on the ideas that have lasted over centuries. गोटे long lasting ideas ऊपर तार कोरटा रहुची and prepare the student to think deeply and critically. Student केमि deep thinking करिवो critical thinking करिवो ता ऊपर रहिला. It rooted to the idea of the human nature constant that the truth does not change over the time. तार माने पेरिनियलिज्म कहबा को तार मीनिंग होची हमरो गोटे लॉन्ग लास्टिंग नॉलेज तार कि चेंज न हबो कांस्टेंट तार रहिथिबो कांस्टेंटली से ग्रोइंग करूथिबो कि चेंजेस हो नथिबो ताको कहिछि पेरिनियलिज्म रो मीनिंग ता होची ताहा सेति पय lasted over the centuries बोली कहिछि. Then definition बेगले कहले definition देले तारा मन पडिबो education is the process of transmitting cultural heritage of the mankind, accumulated wisdom of the race and the eternal truth to the next generation. Robert Hutchins कहते हैं the purpose of the education is to cultivate the intellect and the moral character by the teaching principle that never changes. ये हमरो डेफिनेशन गुडा को डायरेक्टली ही मन रखि पढेको पड़िबो बट द मीनिंग को आमे टिके बुझिबा को पड़िबो. तने हम जिबा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अंडर द पेरिनियलिज्म ऊपर हमरो एम और ऑब्जेक्टिव ता कोन सेटा देखिबा. फर्स्ट एम हला हमरो कल्टीवेशन ऑफ रेशनल माइंड. रेशनल माइंड माने डेवलपिंग द रीजनिंग लॉजिक क्रिटिकल थिंकिंग. हमरो लॉजिकल थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग रीजनिंग को डेवलप करिबा. ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रूथ imparting the timeless knowledge and the moral value. हमरो ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज यूनिवर्सल ट्रूथ पर हेबा कथा. imparting timeless knowledge and the moral value पर फोकस करिछि. intellectual and moral development focus upon the character and the virtue of the through the classical studies. Preparation for the life training the student for the face the life challenges wisdom rational judgment. माने ओवरऑल कहबा गले हमरा उटे डेवलप लॉजिकल थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग उटे मोरल थिंकिंग ऊपर डेवलप करबा को पड़िबो. तार एम होची हमरा मोरल डेवलपमेंट ऊपर फोकस करि छि. पेरिनियलिज्म लॉजिकल थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग ऊपर तार जेमिति हम पढुथिले कि तार मीनिंग ता उटे कांस्टेंट हमरा जो नॉलेज ता उटे कांस्टेंट एक रहइबो ताको चेंजेस हो नथिबो. उटे ट्रूथ ता हमरा कांस्टेंट माने ट्रूथ ता माने यूनिवर्सल ट्रूथ ता नॉट चेंज ही पर ओवर द टाइम से चेंज न हो ता ऊपर ही फोकस करि छि. देन हमें तार ऑब्जेक्टिव को देखिबा टू टीच द ग्रेट वर्क ऑफ लिटरेचर द फिलोसफी साइंस द ग्रेट बुक. So to foster the moral and the intellectual discipline, emphasize the classical, liberal and the art education, grammar, logic, rhetorics,
etc. Train the student the eternal truth, not the transient facts or the vocational skill. ଏଥିରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଟ୍ରୁଥ୍ ଉପରେ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଟ୍ରୁଥ୍ କୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେନ୍ କରିକୁଲମ୍ କ'ଣ ରହିବ according to the perennialism, based on the great books of the western civilization। ଆମର ୱାର୍କ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର, ପ୍ଲାଟୋ ୱାର୍କ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ୱାର୍କ କରିଥିଲେ, ସେକ୍ସପିୟର ୱାର୍କ କରିଥିଲେ। ସୋ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଦ ଫିଲୋସଫି, ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ ଫିଲୋସଫି, ଲଜିକ୍, ଲିଟରେଚର୍ସ, ସାଇନ୍ସ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, theology and history, emphasize on the theoretical knowledge over the practical skill। ଏହା ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲେ ଆମର theoretical skill ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ theoretical skill ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଥିଲା। reject the vocational and the technical education as the primary focus। ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଫୋକସ୍ଟା theoretical knowledge ଥିଲା, ଆଉ ଆମର vocational ହେଲା, technical knowledge education ହେଲା, ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା, ଏହାକୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଇମେରୀ ଫୋକସ୍ ଆମର ନଥିଲା, ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋକସ୍ ଥିଲା theoretical knowledge। According to perennialism, rule of the teacher in the perennialism, authoritative guide and intellectual model ଥିଲେ। authoritative guide ଥିଲେ, intellectual model ଥିଲେ। focus upon the Socratic method, questioning and dialogic discussion, help student to grasp the universal truth, maintain the discipline, foster the mental and the moral growth। Rule of the learners, active seeker of the truth and the knowledge, learner must be developed the intellectual and the disciplines। Education is not about the personal interest but also the universal knowledge। Then ଆମର teaching method ଥିଲା ଆମର Socratic, there is the lecture with discussion ଥିଲା ଆମର main ଏମଟା ଆମର lecture method ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ Socratic method, dialogic method, discussion କରିକି ଆମର teaching method ଟା ଥିଲା। emphasize upon the critical analysis of the classical text, repetition, memorization, foundation of the knowledge, debate is essay writing, logical reasoning, it is exercise। Discipline and the school environment, strong emphasis on the order, routine and the structures, moral education, character formation are the key, encouragement with the authority and the traditions। ଆମର ସମରି ଦେଖିବା ଟିକେ, ସମରି ଟେବୁଲରେ ପଳେଇ ଆସିବା। ଆମର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଲା ଫିଲୋସଫି, ଆମର ଫିଲୋସଫି ରହିଲା ଆମର perennialism, ଫୋକସ୍ କାହାକୁ କରୁଥିଲା, ଇଟର୍ନାଲ ଟ୍ରୁଥକୁ, ଯାହା ଚେଞ୍ଜିଂ ନ ହେଉଥିବ after the few times or the long period of the times। classical education ଥିଲା, ଏମ୍ ଆମର ଥିଲା intellectual and the moral development, intellectual and moral level ଆମର prime aim ଥିଲା। key thinkers ମାନଙ୍କର ରହିବେ ରୋବର୍ଟ ଥିଲେ, ମୋର୍ଟାଇମର୍ସ ଥିଲେ, ଜେକ୍ୱିସ୍ ମାର୍ଟିନ୍ ଥିଲେ। କରିକୁଲମରେ ଆମର ଗ୍ରେଟ୍ ବୁକ୍ସ, କ୍ଲାସିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। ଟିଚର ରୁଲଟା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଗାଇଡ୍, ସୋକ୍ରେଟିକ୍ ମେଥଡ଼ ଥିଲା ଆମର ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼ଟା। ଲର୍ଣ୍ଣର ରୁଲରେ ଆମର ସିକ୍ ନଲେଜ, ଡେଭଲପ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ। କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଥିଲା ଟୁ ରିଜିଡ୍, ଇଗ୍ନୋର ଦ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନିଡ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନିଡ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରୁନଥିଲା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଫୋକସ୍ କରୁନଥିଲା, କ୍ଲାସିକାଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଉପରେ ବେସ୍ ଥିଲା, ସେଟା କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଥିଲା। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ବେସିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଦ perennialism। ଦେନ୍ ଆମେ କିଛି MCQ ମଧ୍ୟ କରିବା ଏଠାରେ। perennialism is the education mainly emphasized on the eternal truth and the classical knowledge ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଥିଲା, ନା କି ଆମର ଭୋକେସନାଲ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଉପରେ ଥିଲା, ନା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଥିଲା। ତ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସି ଅପସନଟା ଆମର ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। Who among the following is considered as the major proponent of the perennialism? Major proponent of the perennialism ରେ ଆମର ହେଇଯିବେ ରୋବର୍ଟ ମେନାର୍ଡ, ହେଇଯିବେ ଆମର main proponent or the major proponent of the perennialism। According to the perennialism, the prime rule of the teacher is to promote the critical thinking to the classical literature। ହେଇଯିବ ଆମର answer option B ହେଇଯିବ ଆମର answer। promote the critical thinking through the classical literatures।
who among which of the following is the best describe the curriculum in the perennialism classroom? Perennialism classroom ରେ ଆମର curriculum ଟା rooted in the classical discipline like the literature, philosophy and the science ଥିଲା। So option B is our answer. The educational theory perennialism is the most closely related to idealism ସହିତ related ଥିଲା। Both perennialisms and the idealism are the emphasize the abstract, unchanging truth value and the perennialism focus on the universal knowledge from the past. The method most commonly used in the perennialist classroom. Socratic questioning and the discussion ଆମେ ଯାହା ପଢିଥିଲେ Socratic reasoning ଉପରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର discussion method ଥିଲା। Which among which of the following is not a goal of the perennialist education? Perennialist education goals. Preparing the student for the changing the job market. या goal नथिला। बट हमर moral development थिला। Mastering the timeless knowledge थिला। Cultivating the rational thinking थिला। But preparing student for changing the job market नथिला। The great book of the curriculum is the most closely associated with which philosophy? Great book टा हमर directly related रहुଛି हमर perennialism ଉପରେ एथिरे आ क्वेश्चन करबा नै हमर सीधा आंसर जीवो ऑप्शन नंबर सी। Jacques Martin believed that education should be focused on. Jacques Martin टा हमर focus କରୁଥିଲେ हमर developing the spiritual and the moral nature of the student. Spiritual and the moral nature of the student ଉପରେ focus କରିଥିଲେ Jacques Martin. Major criticism of the perennialism is to it is the rigid थिला हमर perennialism रो criticism थिला rigid थिला elitist थिला ignoring the individual differences थिला। सो हमर डिस्कशन पार्ट टा सरी जायछि हमर perennialism को हम डिस्कशन कले ता सहित हमर 10 टा एमसीक्यू ମଧ୍ୟ कले। सो क्लास को एमती चैनल को टिके सब्सक्राइब करूथांतो आउ टेलीग्राम ग्रुप रे ମଧ୍ୟ जॉइन होंतो रहंतो सेटारे ମଧ୍ୟ क्विज गुडा प्रोवाइड कर दछु एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ओडीएस ମଧ୍ୟ प्रोवाइड करा जिवो बहुत शीघ्र ओडीएस आसीबा को जाउती। सो कीप लर्निंग एंड कीप स्टडी। थैंक यू।